please march up the teams. Ladies and gentlemen, may I request you for a round of applause to welcome the two teams, the Bodyguard team turning out in white shirts and the Lancers team in red shirts. We'd like to introduce you to each one of the players as they stand in front of you. And let me begin with the Lancers team. Playing at the number 1 position, Mr. Siddhant Sharma in the blue and yellow helmet. Siddhant Sharma is a member of the national polo team. Let's give him a big round of applause, please. तालियां थोड़े दमदार बजाइए। और दूसरे नंबर पर खड़े हैं बशीर अली, बहुत ही दमदार प्लेयर हैं। काली हेलमेट में नवीन सिंह, सफेद घोड़े पर सवार दफादार सुखजीत सिंह, और आज के मैच में सबसे युवा खिलाड़ी 17 साल की आयु वाले मास्टर दीनो धनकर। And now let me begin with the players of the Bodyguard team. From your extreme right side, we have Abhimanyu Patha. Ladies and gentlemen, these are the top polo players of India. Let's give them a big round of applause. In the dark helmet wearing number 4 is Simran Shergill, currently the highest rated polo player in India. In the red helmet, the former commandant of the 61st Cavalry, Colonel Navjeet Singh Sandhu. And the commandant of the President's Bodyguard, Colonel Anup Tiwari on a grey horse. And wearing the body protector in the dark helmet, Shri Naveen Jindal. The two umpires in front of you, towards your right side, we have Colonel Bhanu Pratap. And towards the left side is Mr. Uday Kalan as you see them. The match referee right by my side, Colonel H.A. Sodi, British Seva Medal, former commandant of the President's Bodyguard. Your kind attention please, players, you have 2 minutes to complete your warm-up. Ladies and gentlemen, I'd like to inform you once again that just in a few moments from now, we expect the arrival of the Honorable President of India. The arrival of the President will be heralded by the fanfare sounded by the ceremonial trumpeters of the President's Bodyguard. All persons are requested to rise when the fanfare is sounded and remain standing till conclusion of the national anthem. दोस्तों, कितना शानदार नजारा है आपके सामने। भारत की राजधानी के बीचों बीच इतना हसीन नजारा, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का परेड ग्राउंड। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर रेजिमेंट के जितने सवार हैं, सबकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राष्ट्रपति अंगरक्षक का हर सवार एक घुड़सवार होने के साथ साथ एक सक्षम टैंकमैन और पैराट्रूपर भी है। इस पोलो ग्राउंड के चारों तरफ अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं और घुड़सवारी के अलग अलग ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने दाहिनी तरफ, वहाँ पर शो जंपिंग एरिना भी है, ड्रेसाज की ट्रेनिंग और शो जंपिंग के जंप्स भी वहाँ पर लगे हुए हैं। और हफ्ते में कई बार सवार अपने घोड़ों के साथ क्रॉस कंट्री की तैयारी भी करते हैं, जो कि यहाँ प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड परेड ग्राउंड के चारों तरफ सेंट्रल रिज के इस वन में क्रॉस कंट्री के ट्रैक्स भी बने हुए हैं। और बाईं तरफ नजर उठा के देखिए तो भारतीय सेना का मिलिट्री बैंड अपने स्थान पर तैनात है। बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार मेजर सोबन सिंह। देवियों और सज्जनों, जैसा कि मैंने आपको कुछ पलों पहले बताया था
राष्ट्रपति जी के आगमन पर फैनफेयर बजाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि फैनफेयर की धुन के साथ आपके अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रीय गान की समाप्ति तक अपने स्थानों पर खड़े रहें। So there's a lot of anticipation in the air. You can see that the players are ready to get on to the action here for the first chukker. Ladies and gentlemen, I'd like to inform you that this is going to be a 4-chukker match. Lancers team turning out in red shirts and Bodyguard playing in white shirts. Quick look at the players once again. For Lancers, we have Master Dino Dhankar, the youngest player taking on the field this afternoon. He is a student of class 12, just 17 years of age. And he has many tournament victories to his credit even at this age. So we have a young star of Indian Polo, Naveen Singh, who is a member of the present national team. And incidentally, so many of these players learned their horse riding and the first baby steps on the polo field right here at the President's Bodyguard Parade Ground. For Lancers, we have the big hitting Bashir Ali. Bashir Ali is always very popular with the spectators. He's a great player, very entertaining, and also a very good human being, great role model for the players as well as all the spectators. Siddhant Sharma, definitely one of the key players in the present national team. Siddhant plays at a handicap of +4. For our spectators who are not familiar with the handicap system of polo, we will tell you all about it just in a few minutes from now. Let's also have a look at the players turning out for the Bodyguard team. Once again, you heard me announce the name of Shri Naveen Jindal. He's wearing the body protector there in the white shirt, dark helmet. Naveen Jindal saw his first polo match 32 years back, right here on this field. And that's when he fell in love with this game, started picking up the horse riding skills and played his first polo match right here at this ground, ladies and gentlemen. All of these players have some deep connection with the President's Bodyguard in one way or the other. Colonel Ajit Singh Sandhu, the former commandant of the 61st Cavalry, one of the finest horsemen in the country, and also a person who, as a youngster, was learning his horse riding skills, show jumping skills, dressage, and I said he was an all-round horseman, and also picked up his polo right here at the President's Bodyguard Parade Ground. Colonel Ajit Singh Sandhu's father, Major General Manjeet Singh Sandhu, is also with us. And Simran Shergill's father, General Shergill, also a former commandant, so 2 former commandants in the stands. All these players have such a deep connection with the President's Bodyguard. And right by my side, Colonel H.S. Sodhi, Vishnu Seva Medal, one of the very few officers who commanded the 61st Cavalry and the President's Bodyguard.
Your kind attention, umpires, please line up the teams in front of the stands. May I request all spectators, please take your seats. देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है, आप सभी कृपया अपने स्थानों पर बने रहें, अपने बच्चों को अपने साथ जरूर रखें. Ladies and gentlemen, I'd like to inform you that the President's Polo Cup is one of the most prestigious polo fixtures in our country, which was revived 10 years back in 2012. After a gap of many years, the President's Polo Cup has been played each year since that year, and it's a great opportunity and a proud privilege for the top players of India to be featured here and to have the privilege of playing before the august presence of the first citizen of our country. Last little tidbits of coordination going on. As I mentioned some time back, this match is going to be broadcast live all over the world on DD Sports, on satellite television, and also being streamed live on the YouTube channel of Prasar Bharati. So let's have a quick look at the field in front of us. One of the finest polo fields in our country. The President's Bodyguard Parade Ground. I'm sure many of our spectators would be wondering, why is this polo ground referred to as a parade ground? Well, the President's Bodyguard is the country's oldest regiment. It was established in the year 1773 and is now celebrating its 250th year. There is so much of history that lies at the foundation of this regiment, the senior most regiment of the Indian Army. And all the savars and troopers of the President's Bodyguard, they go through their training paces here. Polo is just one of the activities that takes place here at the PBG Parade Ground. The young recruits
The soldiers of the President's Bodyguard go through their physical training, horsemanship training, and a whole lot of military training here at the PBG parade ground. A number of facilities towards the extreme right side you can see. These are all horsemanship training facilities, and there are cross-country riding tracks as well. Trails that are named in very colorful, interesting fashions. There are different routes within the forest. All of that build up to some great horsemanship skills that we are going to witness this afternoon immediately after the polo match. Your kind attention please, all players, please approach the grandstand and line up on the first tee. Umpires, please line up the players in front of the grandstand. You need to be on the first tee, please. Teams can approach the grandstand. Please approach forward by 10 yards so that you can be closer. Thank you. देवी और सज्जनों, राष्ट्रपति अंगरक्षक के आउटराइडर आपके सामने। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
teams line up for the ball throwing, please. सभी फोटोग्राफर्स से निवेदन है मैदान से 10 गज की दूरी पे आ जाइएगा। बॉडीगार्ड की टीम व्हाइट शर्ट्स में और लांसर्स की टीम रेड शर्ट्स में, और इसी के साथ प्रेसिडेंट्स पोलो कप यहीं पे शुरू होता है। अंपायर्स का संकेत टीम्स को उन्होंने रोका। All right, ladies and gentlemen, you can see that the ball is now in play. The President's Polo Cup 2022 gets underway. That's the first touch, and that's coming from the youngest player on the field. Colonel Navjeet Sandhu strikes. It's Bashir Ali. Bashir Ali on the ball. Bashir Ali. Lovely drive along the ground. What a beautiful sight. He sets up the first play for his Lancers side. That's Simran Shergill getting ready for a backhander. Nice cut backhander. Turns play towards the grandstand. And a long backhander struck there by Naveen Singh. But the ball racing past the back line, wide of the goal mouth. No, it's still inside. And Simran Shergill turns around. He's got a chance there. There's no signal from the goal judge. On the far side of the field, this is Naveen Jindal now in attack. A backhander coming from Naveen Singh, and also a whistle. That was the first whistle of this match. The two umpires, Uday Kalan and Colonel Bhanu Pratap. Colonel Bhanu Pratap closer to the grandstand. Uday Kalan towards the center of the field, awarding a penalty in favor of the Bodyguard team. For the Bodyguard team, we have Simran Shergill, Colonel Navjeet Sandhu, Shri Naveen Jindal and Colonel Anup Tiwari, who are on the field right now. And this is Simran Shergill getting ready to strike for the Bodyguard team. Decides to take a little tap. Simran waiting to release the ball. There comes a powerful strike. The ball moving towards the goal mouth. Look at that. It's going straight. This is looking like a golf course there. That's Naveen Jindal who has picked up the ball. Naveen Jindal in a chance to score the first goal for this game. And yes, he's done it. Naveen Jindal scoring the first goal for the Bodyguard team. The circle of life completes for this man. Naveen Jindal first saw a polo match right here at the PBG Parade Ground 32 years back. Ladies and gentlemen, I was chatting up with Naveen Jindal when he was a young man, just a student, enamored with this fascinating game. And it was right here as a young boy that he saw his first polo match. And today, before the Honorable President of India gets to score the first goal, the ball is once again in play. It's Bashir Ali. Bashir Ali in the ball now. Bashir asking Naveen Singh to move up. Bashir with the ball. He decides to make a run with the ball. He's being pursued by Colonel Navjeet Sandhu. The ball taking a deflection of the pony. Gets left behind. It's Colonel Navjeet Sandhu. Takes a quick turn on the ball and strikes the ball forward. It is the Bodyguard team once again in attack. Simran Shergill checking his horse. Naveen Singh getting ready for a backhander. An offside backhander which has been met by Colonel Navjeet Sandhu. Simran has the ball. Simran strikes a beautiful strike. The ball is going towards the goal mouth. It's straightening out. It's straightening out for Simran. And oh, it's been struck. But the ball goes wide and out of play. That was Simran in attack. The last strike just going a little wide and out of play. And that's a hit in.
Quickly taken. Bashir Ali playing at number 4. Passes the ball to Naveen Singh. Naveen Singh being marked by Simran. Naveen Singh with the ball. Bashir Ali asking for a pass. Naveen strikes. The ball is slowing down before Simran Shergill. Simran takes the ball forward. Once again the ball taking a deflection. And it is Naveen Singh who picks up the ball for the Lancers team. He's in attack. Naveen Singh all by himself. It is Naveen striking the ball even as it goes a little wide. Naveen Jindal trying to defend for the Bodyguard team. Naveen Singh with one strike, but the ball looks like it's going to go wide. Yes, that goes across the back line and out of play. For our spectators who are new to the game, and I would like to inform you very quickly, this is the largest field in any field sport of the world. Polo is played in 76 countries across the world, and modern polo took its birth in our beloved country. It was 172 years back in the 1850s that modern polo was discovered in the highlands of Manipur. We have another whistle. The umpires signaled a half chukker break for players to go and change over to fresh horses. So this match is going to be played over 4 chukkers. Each chukker has a playing time of 7.5 minutes. At 7 minutes, the first hooter is sounded. Play continues for another 30 seconds unless there is a goal or a stoppage in play. So 4 chukkers for this game. Short breaks between chukkers of 3 minutes. Half-time breaks slightly longer at 5 minutes. And the game will finish with the end of the 4th chukker. The scoreboard right now, just that one goal on the board for the Bodyguard team. Players have gone to their respective pony lines to change over to fresh horses. This was a rule instituted by the Indian Polo Association 4 years back in 2018 on account of the challenging air quality conditions that prevail in our national capital at this time of the year. And ever since, a half chukker break has become the norm in every polo match in our country. So this gives a big relief and respite to the horses. But a very positive outcome of this, apart from the fact that the horses' health is preserved, and the well-being and health of the horses is of paramount importance in this game. But apart from the health factor, we also have fresh and fast horses on the field at all times. That's a nice long hit by Simran Shergill towards the sideboards. Right in front of the grandstand is Naveen Jindal approaching, playing for a bounce, tries for a pickup, doesn't make contact. Is Bashir Ali who picks up the ball. Bashir on the ball. Bashir with Naveen Singh right in front of him. He's being marked by Colonel Navjeet Sandhu. It is Bashir Ali on the ball. Still tapping. Bashir. And now decides to take the ball ahead. A near side pickup. It's still Bashir Ali on the ball. He's taking the ball all by himself towards the goal mouth. The ball taking a deflection. It's Simran Shergill. Simran takes over possession. And a whistle coming from the umpire. Umpires having a chat. The 2 umpires, Uday Kalan and Colonel Bhanu Pratap, and the match referee, the senior most match official right by my side, Colonel H.S. Sodi, Vishesh Seva Medal, former Commandant of the President's Bodyguard. So in every polo match, we have 4 players in a team and 2 umpires on the field. Sometimes there is a difference of opinion between the 2 umpires. Why does that happen? Perhaps the angle of observation, or maybe an umpire gets obstructed in his view by a player or a horse. And that's when the umpires have a difference of opinion. And if they do have a difference of opinion, then they approach the match referee, whose decision is final. Right now, it's Colonel Navjeet Sandhu checking his horse. Right in front of the grandstand, Colonel Navjeet Sandhu once again. Naveen Singh backs the ball, turns play in favor of the Lancers team. But we have Simran Shergill shutting the gate for the Bodyguard. Simran Shergill, winner of the Arjun Award for Excellence in Polo, playing at the number 4 position for the Bodyguard team. And with Naveen Singh who picks up the ball. Naveen in attack for the Lancers team. He's picked up the ball nicely. He's moving towards the target. Is Naveen. He's got a chance there. And yes, the ball. Oh, yes and no, no and yes. Everything happening there. An anticlimax as Naveen Singh hits the ball a little wide. Spectators often wonder, you know, maybe there is a huge margin of error possible on a field such big as this, but in a field which measures 300 yards by 150 yards, it's a game of precision. This is Naveen Jindal, which is approaching. Naveen Jindal with a strike. He strikes it nicely. Look at the speed of that horse. Oh, what a strike. But the ball going over the boards, and that's going to be a free hit for the Lancers team.
Just under 2 minutes of play left in this first chukker. Bodyguard in the lead with 1 goal on the board. Lancers trying really hard, but Lady Luck not yet smiling on them despite all their efforts. The ball just missing the mark on the previous attempt by a few inches. This is Bashir Ali now on the ball. Navjeet Sandhu right ahead of him. Bashir decides to free his arms and strikes the ball. What a thumping strike by Bashir Ali. It's Simran Shergill galloping in defense. What a backhander. Turns play for the Bodyguard team, and it is Bashir Ali back on the ball. Bashir turns around. Once again, he's being marked by Colonel Navjeet Sandhu. Look at the way Bashir has turned a full circle. He's now in attack. Big swing, no contact, and a backhander. The ball gets left behind. Naveen Singh on the ball. Naveen keeping the ball close, turns around. Is he going to take one swing? Yes, he's waiting for some space. He strikes it hard. Has the ball gone through? What do the umpires say? There's a goal judge standing behind the goal post. Well, the umpires have given the ruling. The ball went out and wide, and that is a hit in quickly taken by Simran Shergill, who struck the ball nicely once again, looking for his forwards as Daftar Sukhjeet backs the ball. Nice backhander, but it's been intercepted by Simran Shergill. Simran, lovely pick up on the run. Look at the way the horse is stretching out. As Simran Shergill in attack for the Bodyguards team. Simran all by himself. He's going wide. He'll have to slow down, turn the ball around. That's what he does. Look at the way he's turned the ball around, making it look so easy. Says thank you very much. Ladies and gentlemen, I had announced a few minutes back, Simran Singh Shergill, the highest rated polo player in India, showing you why he is who he is. Let's have a big round of applause for that lovely strike by Simran Shergill, winner of the Arjun Award for excellence in polo. And on that note, we come to the end of chukker number 1 as the Bodyguard teams leads with 2-0 at the end of the first chukker. We'll take a short break of 3 minutes and be back with you for all the action for chukker number 2. Players returning to their pony lines to change over to beautiful sight here at the PBG parade ground. The haunting melody of Twilight being played by the Indian Army's band from the 3 Signal Training Center, being led by Subedar Major Soban Singh. Polo was first discovered, when I say polo, I mean modern polo was first discovered in the highlands of Manipur in the mid-1850s. In fact, it was the year 1857 when 2 young officers of the British Indian Army who were scouting for young men in the highlands of Manipur saw a game being played on horseback. Captain Robert Stewart and Major John Shearer. And from there they picked up the details of this game and brought it back to Kolkata, then known as Calcutta. I'm proud to inform you that the first polo club in the world was established at Silchar in the year 1859. That polo club doesn't exist anymore. But the oldest existing polo club in the world, the Calcutta Polo Club, established 1861. And that still exists. Polo has a glorious history, and the world knows modern polo's roots as they began in India, how polo was taken up by the various princely states, quickly adopted by the cavalry regiments, as polo was a game that was seen to be ideal for horsemanship training, not only for the cavalry soldiers but also for the cavalry war horses. Today, we have the horses of the President's Bodyguard, the elite and the senior-most regiment of the Indian Army, and all the horses of the President's Bodyguard, like the troopers, play multiple roles for their regiment. Players back on the field to restart play for the second chukker.
और दोस्तों इसी के साथ दूसरा चक्कर यहां शुरू होने वाला है। स्कोर बोर्ड पर केवल 2 गोल हैं अभी तक और दोनों गोल बॉडीगार्ड की टीम ने स्कोर की है। देखिए किस तरीके से अंपायर ने बॉल को अंदर फेंका और इसी के साथ गेम शुरू हुई और डीनो ढंकर लांसर्स टीम के लिए आक्रमण पे और डीनो ने उठाई बॉल, बहुत ही बढ़िया शॉट लगाई है, परफेक्ट डायरेक्शन है डीनो ढंकर की शॉट। सिमरन शेरगिल की कोशिश उसको बाहर ढकेलने की, लेकिन इसी के साथ बशीर अली ने एक हल्का सा टैप दिया और लांसर्स की टीम ने अपना पहला गोल वहीं पे दागा। ये हमारे लिए एक बहुत ही रोमांचक बात है, गर्व की बात है कि आज आपके सामने एक युवा खिलाड़ी जिनकी उम्र केवल 17 साल है, वो आपके सामने इस मैदान पर खेल रहे हैं। डीनो ढनकर उम्र 17 और मेरे ख्याल अभी अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। देखिए किस तरीके से अब बॉल को उठाने की कोशिश की, वहां बशीर अली एक बार फिर बॉल पर आके नियर साइड पे बॉल को उठाने की कोशिश की, बॉल वही मैदान पर और नवीन सिंह ने करारी शॉट के साथ बॉल को आगे बढ़ाया, लेकिन इसी के साथ अंपायर्स का सिग्नल। देखिए जब अंपायर्स कोई भी हरकत से एग्री नहीं होते, अगर वहां फाउल होता है किसी भी प्रकार का, तो अंपायर्स अपनी विसल को बजाते हैं और विसल जब बजती है अंपायर्स की तो वहां पे 3 चीजें होती है मैदान पर। विसल के बजते ही प्लेयर्स को रुकना पड़ता है और टाइम कीपर को घड़ी रोकनी पड़ती है, लेकिन जो सबसे समझदार लोग हैं वो तो घोड़े हैं, वो अपने आप ही रुक जाते हैं। उनको इतनी समझ है इस गेम के बारे में कि अंपायर का संकेत आया नहीं कि घोड़ों की शक्ल देख के आप पहचान जाएंगे कि भैया ये तो फाउल हो गया। अब क्या करें। सिमरन शेरगिल के सामने बॉल पड़ी है, पेनल्टी से उन्होंने ली स्पॉट हिट, लंबी शॉट लगाई है, 60 गज की शॉट के साथ बॉल को वहां पे भेजा गोल के नजदीक। वहां पे अभिमन्यु पाठक तैयार थे बॉल को ले जाने के लिए। अभिमन्यु बॉल पर हैं, अभिमन्यु और उन्होंने टैप के साथ दागा ये तीसरा गोल। पोलो एक बहुत ही जोखिम भरा खेल है, दुनिया में सबसे रिस्की स्पोर्ट्स में माना जाता है पोलो। लेकिन दोस्तों डर तो बहुत लगता है इस गेम को खेलने में, लेकिन हर खिलाड़ी जानता है, जैसे कि भारतीय सेना का हर सैनिक जानता है कि डर के आगे जीत है। और जी हां, अपने मन में जितनी भी शंका होती है उन शंकाओं को पीछे हटाकर, और देखिए किस तरीके से आप बशीर अली एक बार फिर से बॉल पर आए हैं। बशीर अली, जितनी बड़ी इनकी भुजाएं हैं उतना ही बड़ा इनका दिल भी है। बशीर अली बहुत ही जानदार खिलाड़ी हैं, पोलो के मैदान में हमेशा अपना कमाल दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से, और ये टक्कर लगाई थी वहां पे। सिद्धांत शर्मा अब आ गए हैं मैदान पर, नंबर 3 की शर्ट पहनी हुई है उन्होंने, लांसर्स टीम के लिए लाल रंग की शर्ट नंबर 3 नंबर के साथ, और बॉल बिल्कुल साइड बोर्ड्स के पास गई, अभी भी वहां पर है। अभिमन्यु के पास बॉल, अभिमन्यु ने बॉल को हिट किया लेकिन ज्यादा ताकत नहीं लगा पाए और बॉल वहां पे रुक गई। डीनो ढंकर के पास एक बार फिर डीनो ने अपना बल्ला घुमाया, वहां पे मैलेट को घुमाते रहे, लेकिन बहुत ही लंबी शॉट लगाई नवीन सिंह ने। और देखिए किस तरीके से मौका था लांसर्स टीम के पास, लेकिन वहां अभिमन्यु पाठक रक्षात्मक रूप से बॉल को पोजीशन में लेते हुए क्लियर किया वहां से डेंजर जोन से। और अब एक मौका है बॉडीगार्ड टीम के लिए, किस तरीके से सिमरन शेरगिल ने बॉल को हल्की सी शॉट के साथ 100 गज आगे भेज दिया। नवीन जिंदल एक बार फिर आक्रमण करते हुए बॉडीगार्ड टीम के लिए, और वहां पर नवीन जिंदल ने बॉल को आगे मारने की कोशिश की। नवीन जिंदल का मुकाबला वहां पे किया नवीन सिंह ने, बैकहैंडर के साथ अपनी दिशा बदली, और सिद्धांत शर्मा ने अब बॉल को आगे बढ़ाया। ग्रैंड स्टैंड के ठीक सामने खेल रहे हैं बशीर अली ने बॉल को उठाया, साइड बोर्ड की तरफ आते हुए, साइड बोर्ड से बाउंस लेते हुए। दोस्तों आपसे अनुरोध है एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए किस तरीके से आक्रमण की वहां पे प्रक्रिया चल रही है। सिद्धांत शर्मा बॉल पर है, सिद्धांत बहुत ही तगड़े खिलाड़ी, लेकिन बॉल ने एक लंबा बाउंस लिया और बैकलाइन की तरफ जा रही है। कर्नल नवजीत संधू ने बैकहैंडर के साथ दिशा बदली। बशीर अली एक बार फिर पोजीशन में उनसे बॉल छीनने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे बॉडीगार्ड टीम के खिलाड़ी। अंपायर्स का वहां पे सिग्नल आया और देखते हैं इस प्ले का नतीजा क्या निकलेगा। अब
पोलो के मैदान में जो हरकत होती है कितनी तेज होती है। देखिए अब अंपायर्स ने सभी प्लेयर्स को हाफ चक्कर ब्रेक दी है। 45 सेकंड का समय है प्लेयर्स को अपने अपनी पोनी लाइंस में जाकर घोड़े बदलने के लिए। उनको 45 सेकंड्स का समय दिया गया है। नजर उठा के अगर आप देखेंगे क्लॉक की तरफ तो 3 मिनट और 30 सेकंड का समय बाकी है इस दूसरे चक्कर में। और स्कोरबोर्ड बॉडीगार्ड टीम के हक में 3 के मुकाबले आगे है, 3 गोल के साथ आगे है। 3-1 स्कोर लाइन है। सिमरन शेरगिल क्विक चेंज के बाद वापस आ गए। आज से 4 साल पहले इंडियन पोलो एसोसिएशन ने एक नया नियम लागू किया था कि चक्कर्स के दौरान आधे रास्ते में प्लेयर्स को 45 सेकंड की एक छोटी सी ब्रेक दी जाएगी ताकि वो जाके घोड़े बदल लें। और दोस्तों वो इसलिए होता था कि दिल्ली में इस समय साल के इन महीनों में पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग तो मास्क लगा सकते हैं लेकिन घोड़ों के पास ये उपाय तो है नहीं। तो इसलिए भारतीय पोलो एसोसिएशन ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि हर चक्कर में हाफ चक्कर में 45 सेकंड का ब्रेक होगा और घोड़ों को चेंज करने का एक चांस मिलेगा प्लेयर्स को। इसका नतीजा ये हुआ है कि घोड़ों की हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, बहुत सुधार हुआ है। और इसका दूसरा जो नतीजा हुआ है फील्ड पर हुआ है कि अब एक पोलो मैच के दौरान पूरे मैच के दौरान फ्रेश घोड़े होते हैं। तो इसलिए गेम की रफ्तार बहुत बढ़ चुकी है। सिमरन शेरगिल बैक लाइन से हिट इन लेने की कोशिश की लेकिन वहां पे बॉल को चूक गए। देखिए जल्दी से अपने घोड़े को टर्न किया और एक बार फिर से पोजीशन में बॉल को लिया। वहां पे सिमरन ने लगाई एक लंबी शॉट, करारी शॉट। वेट कर रहे थे वो कि अभिमन्यु वहां पर बॉल तक पहुंचेंगे लेकिन नवीन सिंह ने जवाब दिया और सिद्धांत शर्मा ने अब बॉल को पकड़ा है। सिद्धांत बहुत ही शक्तिशाली खिलाड़ी हैं सिद्धांत शर्मा, और उन्होंने करारी शॉट लगाई। और देखिए मैंने बोला कि शक्तिशाली खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया आपके सामने। राष्ट्रीय टीम की जो इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, सिद्धांत शर्मा जो है आज नेशनल टीम के एक जाने माने खिलाड़ी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये नीली और पीली हेलमेट में 3 नंबर की शर्ट इन्होंने पहनी हुई है लांसर्स टीम के लिए। जब ये स्कूल में स्टूडेंट थे सिद्धांत शर्मा तो टेनिस प्लेयर होते थे। इनकी बहुत ही अच्छी आई हैंड कोऑर्डिनेशन थी। इनके माता पिता से इनकी कहानियां सुनने को मिलती हैं। और देखिए कितनी लंबी शॉट लगाई वहां दीनो धनकर ने। इससे पहले के लोग समझ पाते क्या हो रहा है वहां पे। सबसे युवा खिलाड़ी आक्रमण में लांसर्स टीम के लिए एक और मौका, एक और गोल स्कोर करने के लिए। वहां पे बॉल थम गई ग्राउंड पर और अभिमन्यु ने बॉल को संभाला लेकिन जब घोड़े एकदम आराम से खड़े हो जाते हैं, चाहे आपको अंपायर की विसल सुनाई दे न दे लेकिन समझ में आ जाता है। दोस्तों पोलो में और खासकर भारतीय सेना में हम घोड़ों को जानवर नहीं मानते, हम घोड़ों को अपना साथी मानते हैं। ठीक है, इसीलिए जब हम पोलो की बात करते हैं ना तो कभी ये नहीं बोलते कि ये गेम घोड़ों पर खेला जाता है, घोड़ों पे खेला जाता है ना। हम बोलते हैं पोलो का गेम घोड़ों के साथ खेला जाता है। और देखिए किस तरीके से प्लेयर्स जूझ रहे हैं वो पोजीशन के लिए। वहां पे सिद्धांत शर्मा आपके सामने हिट लगाने की कोशिश, बैकहैंडर लगाया सिमरन शेरगिल ने। और इसीलिए 10 गज का एक सेफ्टी जोन होता है बोर्ड्स के आजू बाजू में और गोल लाइन के पीछे 30 गज का सेफ्टी जोन। अंपायर ने विसल बजा के गेम को रोका कुछ सेकंड्स के लिए। वहां पे दीनो धनकर के घोड़े का जो सामान है उसमें थोड़ी सी कुछ अनबन हुई है जिसको वो जाकर देखिए किस तरीके से अपने पोनी लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखिए कि पोलो का जो गेम है ना ये टीम गेम है। मैदान पर आप 16 खिलाड़ी देख रहे हैं और मैदान के बाहर उससे दुगनी तादाद में लोग खड़े हुए हैं, हर टीम के साथ हैं 16 खिलाड़ी। जी हां, 8 इंसान और 8 हमारे साथी। देखिए ये घोड़े भी कैसे देख रहे हैं, किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं, इनके दिल में कोई टेंशन नहीं। इनको पता है कि पोलो का मैच चल रहा है। और देखिए किस तरीके से अपने राइडर्स की बात समझ रहे हैं। सिद्धांत शर्मा ने बॉल पे लगाई एक बार, इतनी जोरदार शॉट, एक ही शॉट के साथ गोल स्कोर करने की कोशिश। वहां पे
बहुत ही लंबी शॉट लगाई और देखिए किस तरीके से गोल स्कोर किया। लांसर्स टीम ने बहुत ही शानदार शॉट लगाई थी वहां पे सिद्धांत शर्मा ने, और बशीर अली ने फाइनल टैप के साथ गोल स्कोर किया। और इसी के साथ देखिए अब स्कोर बोर्ड जो है एक अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है, 3 के मुकाबले 3। और ये नियर साइड पे पिकअप करने की कोशिश थी नवीन सिंह की। अभिमन्यु पाठक अब बॉल पर हैं। अभिमन्यु के साथ सिमरन शेरगिल। 50 सेकंड का समय बाकी है इस दूसरे चक्कर में। 3 गोल्स ईच, दोनों ही टीमें 3 गोल के साथ बराबरी पर है। वहां पे सिमरन शेरगिल ने बॉल को आगे बढ़ाया। सिमरन शेरगिल एक सोलो अटैक को आगे बढ़ाते हुए सिमरन शेरगिल बॉडीगार्ड टीम के लिए देखे किस तरीके से बाउंसिंग बॉल से बीट हुए। वहां पे सिद्धांत शर्मा उन्होंने करारा बैकहैंडर लगाया और दिशा को बदला। वहां पे एक और बैकहैंडर लगाया कर्नल नवजीत संधू ने। नवीन सिंह ने बॉल को पकड़ा। नवीन सिंह घुमाते हुए नजरों को बॉल के बिल्कुल ऊपर रखा हुआ नवीन सिंह ने, देखिए नवीन सिंह ने बॉल को आगे बढ़ाया, वहां पास दिया सिद्धांत शर्मा की बड़ी स्विंग, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पाया। और नवीन सिंह ने अब बॉल को उठाया, नियर साइड पर आगे बढ़ाया, पास दिया। वहां डीनो ढनकर ने अपने घोड़े को चेक करते हुए लंबा बैकहैंडर सिमरन शेरगिल का। और एक बार फिर सिद्धांत शर्मा बॉल की तरफ, काफी जगह है उनके पास टर्न करने के लिए, क्लीन टर्न के साथ मुड़े हैं। पहला हुटर बच चुका है। 25 सेकंड का खेल और बाकी है। सिद्धांत शर्मा के पास मौका है, एक बार फिर एक जोरदार शॉट के साथ गोल मारने की कोशिश। वहां पे देखिए बॉल ने हल्का सा डिफ्लेक्शन लिया घोड़े के साथ। बशीर अली बशीर ने वहां पे लगाया एक टैप। और इसी के साथ लांसर्स टीम ने अपना चौथा गोल स्कोर किया। और दूसरे चक्कर की समाप्ति पर यानी मैच के हाफ टाइम पर अब लांसर्स की टीम इस मैच में आगे है 4 गोल्स के साथ, बॉडीगार्ड के 3 गोल स्कोरबोर्ड पर। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। प्लेयर्स को भी हाफ टाइम ब्रेक दिया गया है, 5 मिनट का समय है उनके पास, जाके वहां पे वो अपने घोड़े बदलेंगे। हाफ टाइम ब्रेक के बाद तीसरे चक्कर के लिए यहां पे गेम शुरू होने वाला है। लेकिन अब राष्ट्रपति अंगरक्षक परेड ग्राउंड में एक नई हरकत आपके सामने। भारतीय सेना का मिलिट्री बैंड सूबेदार मेजर सोबन सिंह के नेतृत्व में फरियाद पेविलियन के आगे आने वाला है। राष्ट्रपति अंगरक्षक परेड ग्राउंड में जो ग्रैंड स्टैंड है, जिसे हम फरियाद पेविलियन के नाम से जानते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट, राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट का एक ऐसा अश्व योद्धा जिसने स्थापित किया था एक राष्ट्रीय कीर्तिमान, नेशनल रिकॉर्ड, आज तक वो रिकॉर्ड कायम है दोस्तों। 195 सेंटीमीटर की हाइट को पार किया था फरियाद नाम के घोड़े ने। 4 अप्रैल 2004 की तारीख। जी हां, हमारा सौभाग्य था कि उस शाम को हम वहां थे जब हमारे सामने ये राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया गया था। उस समय दफेदार सज्जन कुमार के हाथ में थी फरियाद की रास, और फरियाद ने रेजिमेंट की फरियाद को कायम किया और वहां पर एक राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया, 195 सेंटीमीटर की हाइट। और अब आपके सामने भारतीय सेना का मिलिट्री बैंड सूबेदार मेजर सोबन सिंह के नेतृत्व में।
patronage. 1904 में रचित ये अमर धुन, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान है हमारा। देवियों और सज्जनों, भारतीय सेना के मिलिट्री बैंड के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। The presence of a military band at the President's Bodyguard parade ground, adding its own unique charm to the game of polo. It is a matter of great pride for all polo players in our country that the Indian Army is the foremost custodian of the game, foremost custodian of polo in India ever since the independence of our country. Players now getting ready to start play for chukker number 3. The scoreboard reading 4-3 in favor of the Lancers team. Uday Kalan, the umpire, throws in the ball and the ball gets underway with Simran Shergill. Simran picking up the ball on the near side. First attack coming up for the Bodyguards team, but look at Siddhant Sharma. Oh, what a delicate backhander, and that ball is turned around by 50 yards. What a beautiful pickup there by Dino Dhankar. There's Naveen Jindal approaching the ball now, getting ready for a backhander, and he gets a nice backhander, Naveen Jindal. Backing the ball, it's been picked up by Simran Shergill. Great anticipation by this senior player, Simran Shergill. Checking his horse, he's being marked by Naveen Singh, getting a big bump, and there is a whistle by the umpire. Polo is a contact sport, but there are rules on how to make contact. Speeds have to be seen and the angle of contact, and Naveen Singh coming and giving a bump to a stationary horse, and the umpires are awarding a penalty for that foul move. Is that going to be a 60-yard penalty? Let's just wait and watch. Yes, a 60-yard penalty awarded to the Bodyguards team. Simran Shergill teeing up the ball. Abhimanyu Pathak moving up, waiting for a deflection. Simran scored a fantastic goal early in this match and is definitely one of the longest hitters of the polo ball in our country. He's teeing up the ball. Unlike in the sport of golf, polo players don't have a plastic tee to set up the ball, but they can use their mallet. Without dismounting from their horse, they can use their mallet to place the ball on a patch of grass, and they like to do that so that they can get a lofted shot that will sail over the heads of the defenders if they get a good strike. That's Simran Shergill from the 60-yard mark. It's a lofted strike. It's gone zooming past, but had a spin on it. And the umpire says no, that ball spun wide, and that did not go on to be another goal. So that's going to be a hit in from the back line. Siddhant Sharma. What a nice shot. Siddhant Sharma has placed the ball with Naveen Singh with a beautiful pickup on the run. Abhimanyu Pathak checking his horse, getting ready for a backhander. There comes a lovely tail backhander from Abhimanyu, and the ball lands up with Simran Shergill. What fine anticipation by the senior player. Simran Shergill now asking for some speed from his horse. He cuts the ball, straightens it out, but Siddhant Sharma galloping towards the ball. Down the center line, Siddhant under pressure, and he delivers with a nice long backhander. Once again, it is Naveen Singh who is picking up the ball. Naveen checking his horse. Naveen Singh keeping the ball in control. And look at the way Simran Shergill has taken over possession with a delicate pickup on the near side. And there is another whistle. Players getting excited and chatty, but the umpires have tight control on the game. Not very happy with that move. Two players making contact at a tough angle. So there are lots of rules that govern the game of polo. Two of the most simple rules to keep in mind is that any situation that creates danger for a player or danger to a horse, then that situation will lead to a foul. So if you see any situation where there is going to be danger for a player or a horse,
then that will be a foul definitely. The other one is when you see two or more players converging on the polo ball from different directions. And this is Abhimanyu Pathak now, taking a strike from the 60-yard mark. Doesn't hit it cleanly. The ball takes a deflection towards the left side. It's been intercepted there. And Siddhant Sharma once again effortlessly passes the ball up 60 yards. There's Naveen Jindal riding hard to back the ball. Doesn't make contacts. Bashir Ali gets a little touch. And Simran Shergill. Simran loses possession. Chance there is Dino Dhankar. Dino picks it up on the near side. Another pick up on the near side is Dino Dhankar overriding Bashir Ali from behind. Place the ball once again with Dino. No, Dino is slightly ahead and Simran Shergill approaching the ball. Has the space to turn around. Once again turns around to the right side and it's a nice cut shot. The ball is going towards the scoreboard. Is it going to be? Yes, it's staying inside the field. Naveen Singh approaching. Naveen backs the ball. Turns play and a sharp check on the horse by Abhimanyu Pathak. Abhimanyu Pathak loses possession to Bashir Ali. Bashir, lovely pick up on the near side from Bashir Ali. But we have Colonel Navjeet Sandhu racing for a backhander, strikes a timely backhander. The ball didn't have too much of pace and it's Siddhant Sharma now in attack for the Lancers team. Siddhant Sharma with a very tough angle trying to connect and the ball is still lying next to the back line. Simran Shergill on the ball now. From the deep end, Simran Shergill with a thumping strike moves the ball across the center line. Naveen Singh playing deep in defense for the Lancers team, checking his horse. He's being followed by Naveen Jindal. Naveen Singh decides to turn around. Naveen Jindal marking Naveen. That's Naveen versus Naveen. A tussle going on the field. This is Siddhant Sharma approaching the ball. Siddhant checks his horse. Oh, you hear the sound there. A cracking shot on the ball. 60 yards as Bashir Ali swings his arm. Bashir strikes. The ball is racing towards the back line. It's going to go wide. It's gone. A backhander from Dino, but the ball had crossed the back line. The goal judge signaling with a flag that it was over the back line and the players are being asked to go and change over to fresh horses with that half chukker break. Three and a half minutes of play left in this third chukker. This is a 4-chukker match, the President's Polo Cup 2022. Bodyguard in the white shirts. A lot of activity taking place on the far side of the field, over the sideboards. And if you saw, ladies and gentlemen, what happened towards the extreme right side of the field, that was Abhimanyu Pathak changing over between horses, and so is Simran Shergill also. All these top polo players, they don't even dismount. They just hop on from one horse to the other. It's not something we amateurs can even think about. Polo has a system of handicap, and that is essentially the rating of a player. When a player begins his polo career, the handicap begins at -2, and as you improve your skills, it goes up to -1, 0, +1, +2, and so on and so forth till +10. The highest rated player in India today, who's playing in front of you, Simran Singh Shergill, is rated at +5. Players back on the field with fresh horses. And even as the players go to change over to fresh horses, their trainers and grooms are minding the horses on the far side of the field and making sure that the horse which has to enter the field is nicely warmed up. And that's a long hit from Simran Shergill, bringing the ball towards the grandstand right in front of the Faryad Pavilion. We've got Colonel Navjeet Sandhu coming on the ball. Navjeet strikes. It's a nice long drive. The ball stuck in the turf. Siddhant Sharma picks up the ball for the Lancers team. He's got open space in front of him. It's Siddhant Sharma. There comes the final strike, but wasn't good enough in direction. Tried his best. ये जब घोड़े दौड़ते हैं गैलप पे ना, देखने में बहुत आसान लगता है. दोस्तों ध्यान रखो, जब 500 किलो का घोड़ा 40 फीट प्रति सेकंड पर दौड़ता है ना, तो दिन में तारे दिखने लगते हैं.
ये देखिए बहुत ही करारी शॉट लगाई वहां सिमरन शेरगिल ने, बॉल के एक बार फिर फरियाद पेविलियन की तरफ मारा, वहां पे कर्नल नवजीत संधू एक रीप्ले की तरफ से उन्होंने हिट करी और बिल्कुल पेविलियन के सामने सामने खेल चल रहा है। आपसे अनुरोध है जोरदार तालियों के साथ प्लेयर्स का हौसला बढ़ाए। व्हाट अ शॉट, क्या करारी शॉट लगाई हुआ सिद्धांत शर्मा ने, एक बार फिर दिशा में थोड़ा सा चूक गए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय टीम के सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी माने जाते हैं सिद्धांत शर्मा। स्कूल में टेनिस प्लेयर थे, लेकिन ये तो भारतीय पोलो की खुशकिस्मती है कि वो बड़े होकर पोलो प्लेयर बन गए। और ये देखिए अब वहां पर अभिमन्यु पाठक ने बॉल को आगे बढ़ाया अपने प्लेयर्स की तरफ। सिमरन शेरगिल अब बॉल पर है, सिमरन ने दिशा पकड़ी, एक बार फिर पेविलियन की तरफ आते हुए सिमरन के पीछे लगे हुए हैं बशीर अली। बशीर अली, उनको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी अगर सिमरन से बॉल छुड़वानी है। बॉल वहां पर एकदम मैदान में रुक गई और ये कर्नल नवजीत संधू अब बॉल पर हैं। नवजीत ने घुमाई अपनी पोलो स्टिक और बहुत ही बढ़िया पास दिया सिमरन शेरगिल को, बॉल बिल्कुल उनके सामने। सिद्धांत शर्मा बिना किसी झिझक के साथ, बिना किसी परेशानी के साथ बॉल को घुमाते हुए एक बार फिर काउंटर अटैक। ओह, अब समझ रहे हैं आप मेहनत का नतीजा। ये देखिए बशीर अली जब प्यार से बॉल मारते हैं तो 100 गज की शॉट लगती है। बशीर अली अब गोल के सामने हैं और उन्होंने हल्का सा केवल बॉल को इशारा दिया और उसी के साथ 5वां गोल स्कोर किया। हर गोल के बाद टीम्स जो हैं सेंटर लाइन पर आती हैं और अपनी दिशा को चेंज कर लेती हैं। ये आधुनिक पोलो का सबसे पुराना रूल भी है। आज से 170 साल पहले जब मणिपुर में आधुनिक पोलो की खोज हुई थी, तब से लेकर अब तक ये रूल गेम में है कि हर गोल के बाद टीम्स दिशा चेंज करती हैं ताकि घोड़े जो है एक ही दिशा में नहीं दौड़ते रहते पूरे समय। कई ऐसे जगह हैं जहां पर पोलो ग्राउंड जो है वो पहाड़ी इलाकों में होते हैं, तो कभी कभी घोड़ों को ऊपर की तरफ दौड़ना पड़ता है। और देखिए सिमरन शेरगिल अब आक्रमण पे हैं। सिमरन शेरगिल के पास मौका है, उन्होंने बॉल को आगे बढ़ाया नवीन जिंदल के पास और नवीन जिंदल ने अपनी टीम को दिया 4था गोल। So ladies and gentlemen, that 4th goal for the Bodyguard team scored by Naveen Jindal. As I mentioned, as a young man, he saw his first polo match right here 32 years back in 1990, and there onwards decided to become a polo player. The other notable thing is that all members of the Indian polo community adore Naveen Jindal for his contribution to the sport, not only as a player but also as a patron. That he now has 5 polo grounds and provides many facilities to polo players from all spectrum of society. The other notable thing, and we have so many achievers in the sport of polo. We can see the tricolor flags in front of us, not the national flag, but colors of the tricolor. And that reminds me of one very interesting fact, that it was more than 2 decades back that a young Naveen Jindal actually fought a legal battle to secure for all citizens of India the right to fly the national flag. And there onwards the flag code was amended and all the new rules and regulations came into play, and now we have the privilege of flying the national flag with all the pride that we have in it, especially in the year as the country celebrates Azadi Ka Amrit Mahotsav, and we see the tricolor flying proudly in every corner of our country. All the polo players feel great affinity for Naveen Jindal for making it possible for not only all of us but also for every citizen, every ordinary citizen of India. सिद्धांत शर्मा जो मैदान पर उतर चुके हैं, देखिए किस तरीके से अपने घोड़े को वार्म अप कर रहे हैं। पोलो के खेल में प्लेयर्स को अपने शरीर को तो वार्म अप करना ही पड़ता है, लेकिन अपने साथ साथ अपने घोड़ों को भी वार्म अप करना पड़ता है। तो इसीलिए मैदान के बाहर जो हर प्लेयर की टीम होती है, अब आप खुद अनुमान लगाइए कि इस मैच में हर प्लेयर के साथ 5 से 6 घोड़े हैं, तो तकरीबन 50 घोड़े आज यहां पर उपस्थित हैं।
राष्ट्रपति पोलो कप में भाग लेने के लिए। और हर प्लेयर के साथ ट्रेनर्स की और सर्विसेज की एक टीम होती है। जैसे जैसे मैदान पर गेम चलता है वैसे वैसे मैदान के बाहर घोड़ों के साथ भी कुछ ना कुछ प्रक्रिया चलती रहती है। जो घोड़े खेलकर मैदान से बाहर जाते हैं उनकी कूलिंग डाउन होती है, उनको धीमी गति पे वॉक कराया जाता है। और जो घोड़े मैदान में उतरने वाले होते हैं उनको धीरे धीरे वार्म अप किया जाता है। देखिए अब आपके सामने वहां पे कैवलरी का एक घोड़ा जिसको ट्रॉट दिया जा रहा है, दुड़की की चाल पे उसको वार्म अप किया जा रहा है। मैच का चौथा और अंतिम चक्कर अब शुरू होने वाला है। स्कोरबोर्ड पर लांसर्स की टीम 5 गोल से आगे है, लेकिन दोनों टीमों में केवल 1 गोल का फर्क है। चौथा और अंतिम चक्कर केवल 7 मिनट का होगा। वहां नवीन जिंदल और कर्नल नवजीत सिंह संधू की अभी भी थोड़ी सी हरकत जारी है। वो देखिए किस तरीके से प्लेयर्स एक एक चीज चेक करते हैं। माउंट होते ही चेक करते हैं कि जो रकाब है वो सही लेंथ की है कि नहीं, स्टिक, क्योंकि एक बार प्ले शुरू हो जाता है तब पोलो के नियमों के अनुसार समय नहीं दिया जाता। तो दोस्तों पोलो में कई ऐसे नियम हैं जो हर गेम पर लागू होते हैं। एक खास नियम यह है कि इस गेम में आप पोलो स्टिक जो है अपने बाएं हाथ में नहीं पकड़ सकते। तो जो लोग लेफ्ट हैंडेड हैं अगर उनको पोलो खेलना है तो उन्हें अपने दाहिने हाथ में राइट हैंड में ही स्टिक पकड़नी पड़ेगी। ये एक पोलो का बहुत ही खास नियम है। दूसरा नियम एक ये भी है कि अगर मैदान में खेल के दौरान किसी प्लेयर की फॉल हो जाती है, कोई घोड़े से गिर जाता है, तो ये गेम रुकती नहीं है। या तो ये हो कि प्लेयर बिल्कुल दिख रहा है कि बहुत ही जोखिम में है और घोड़े उसके ऊपर हावी होने वाले, तब गेम रोका जाएगा। लेकिन प्लेयर के गिरने पर गेम को रोका नहीं जाता। लेकिन अगर घोड़े की फॉल हो गई, अगर कोई घोड़ा जमीन पे आ गया तो गेम तुरंत रोका जाता है। और इसी के साथ चौथा और फाइनल चक्कर शुरू हुआ। वहां पे सिद्धांत शर्मा ने एक बार फिर बैकहैंडेड शॉट के साथ पास दिया नवीन सिंह को। नवीन सिंह ने 2 नंबर की शर्ट पहनी हुई है लांसर्स टीम के लिए। नवीन सिंह ने अपनी बाजू घुमाई और बहुत ही करारी शॉट लगाई। वहां पे बॉल एकदम चीरते हुए मैदान को जाती हुई गोल की तरफ, वहां पे देखिए मैदान पे रुक गई है बॉल। वहां पे उठाया बशीर अली ने और बॉल को टैप किया, लेकिन वहां पे अंपायर का संकेत भी था, अंपायर की विसिल बज चुकी थी और इसीलिए बॉल को वहां पे स्पॉट हिट के लिए मैदान पर डाला गया है। बॉडीगार्ड टीम को एक फाउल दिया गया। लांसर्स की टीम का जो आखिरी मूव था उस पर फाउल घोषणा की है अंपायर्स ने और बॉडीगार्ड की टीम को ये पेनल्टी, ऑन द स्पॉट पेनल्टी दी गई है। वहां पे सिमरन शेरगिल अब बॉल के ऊपर आए और उन्होंने टैप लिया। छोटा सा टैप लेने के बाद अब अपनी रफ्तार बढ़ाई है। वहां पे बशीर अली भी आ रहे हैं उनके साथ। देखिए किस खूबी के साथ सिद्धांत शर्मा ने बॉल को चुराया। वहां सिद्धांत शर्मा अब बॉल पर है, नवीन सिंह उनके साथ है। बिल्कुल यहां पे कोशिश है नवीन सिंह की कि जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी हैं उनको सिद्धांत से दूर रखा जाए। सिद्धांत ने एक बार फिर करारी शॉट लगा के बॉल को गोल तक पहुंचाने की कोशिश की। वहां पे बशीर अली ने बाईं तरफ से बॉल को उठाने की कोशिश की। खिलाड़ी जूझ रहे हैं वहां पोजीशन के लिए और बॉल लगता है कि जी हां मैदान से बाहर हुई, बैकलाइन के पार गई और इसी के साथ एक बार फिर हिट इन के साथ खेल शुरू होगा। अंपायर्स ने प्ले का इशारा करते हुए गेम को शुरू करने का वहां संकेत दिया और सिमरन शेरगिल अब बॉल पर हैं। उन्होंने लंबी शॉट लगाई है, पास दिया वहां पे नवीन जिंदल को, लेकिन बॉल नवीन के काफी दूर गिरी और सिद्धांत शर्मा एक बार फिर बॉल पर है। सिद्धांत ने देखिए किस खूबी से एक बार फिर बैकहैंडेड पास के साथ दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन वहां पे सिमरन शेरगिल ने फिर वहां पे दरवाजे रोके। और पोलो के खेल में रक्षात्मक नीति तो होती ही नहीं दोस्तों, केवल 3 नीतियां होती हैं पोलो में, आक्रमण, आक्रमण और आक्रमण। जब रक्षात्मक रूप में भी प्लेयर को आगे बढ़ना पड़ता है तो वहां पे गैलप की रफ्तार पे ही चलना पड़ता है। लंबी शॉट के साथ एक बार फिर सेटअप करने की कोशिश, सिद्धांत शर्मा ने बॉल को आगे बढ़ाया। वहां पर बशीर अली और सिमरन के बीच में कशमकश चल रही है, कौन ले जाएगा बॉल को आगे। सिमरन शेरगिल के बगल में है बशीर अली, देख रहे हैं उनको और सिमरन ने
लंबी शॉट के साथ बॉल को आगे बढ़ाया, अभिमन्यु पाठक को एक परफेक्ट पास दिया, अभिमन्यु ने शॉट लगाया, क्या शानदार शॉट लगाई वहां पे अभिमन्यु ने, बॉल वहां पे गिरी 40 गज, फिर भी बचे हैं। नवीन सिंह जूझ रहे, नवीन जिंदल के साथ, बैकहैंड के साथ नवीन सिंह ने दिशा बदली और एक बार फिर अभिमन्यु और सिमरन दोनों ही बॉल के करीब थे। अंपायर्स ने विसल बजाकर फिर एक बार फाउल का संकेत दिया और सिद्धांत शर्मा स्पॉट हिट लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। सिद्धांत ने एक बार फिर लंबी शॉट के साथ पास दिया, बॉल धीमी होती जा रही है नवीन सिंह से पहले, वहां पे कर्नल नवजीत संधू का एक बैकहैंडर जिसको रोका, वहां पे अभिमन्यु पाठक ने बॉल को रोका, लेकिन बशीर अली ने बैकहैंडर लगाया। देखिए खूबी के साथ सिद्धांत शर्मा ने बॉल को पकड़ा है, आगे बढ़ते चले जा रहे, कट शॉट लगाने की कोशिश, सिमरन शेरगिल मुस्कुराते हुए बॉल को अपने साथ ले चले आगे। नवीन सिंह वहां देख रहे थे, मौके का इंतजार था, लेकिन बॉल को थोड़ा ज्यादा ही जोर से मार लिया, बैक लाइन के बिल्कुल करीब है बॉल, और सिमरन ने बैकहैंडर लगाकर गोल से एक बार फिर दिशा को पलटा। और अभिमन्यु पाठक के बाद अब मौका है, अभिमन्यु पाठक क्लियरेंस की कोशिश, नवीन जिंदल भी कोशिश कर रहे थे, अभिमन्यु से भी बॉल दूर हो गई, अभिमन्यु वहां पर है बॉल पर, दीनो घनकर अब आगे बढ़ते हुए, डीनो वेट कर रहे हैं बैकहैंडर का, लेकिन वहां पे सिमरन शेरगिल ने बॉल को आगे बढ़ा, बशीर अली ने बैकहैंडेड शॉट के साथ दिशा पलटी लांसर्स टीम के लिए। बहुत तगड़ी कशमकश चल रही है दोनों टीम्स के बीचों बीच, केवल एक गोल का डिफरेंस है, जैसा कि आप स्कोरबोर्ड देख सकते हैं। लांसर्स की टीम 5 गोल के साथ आगे है, बॉडीगार्ड के खाते में केवल 4 गोल हैं। डीनो ने बैकहैंडर लगाने की कोशिश की, वहां सिमरन शेरगिल अब बॉल को फिर भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक गज के साथ, एक विसल भी हुई, वहां से अंपायर्स का संकेत। सिमरन ने आगे बॉल को दाग तो दिया, लेकिन उससे पहले अंपायर्स ने एक विसल बजा दी थी। अंपायर्स की विसल के बाद अगर मैदान पे कोई भी हरकत हो तो उसे माना नहीं जाता, अगर गोल स्कोर भी हो जाता है तो भी वो माना नहीं जाता। और इस मैच में आखिरी बार प्लेयर्स को मौका दिया गया है घोड़े बदलने के लिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि हर प्लेयर अपने सबसे तेज घोड़े को अब मैदान पर उतारने वाला है। प्रेसिडेंट्स पोलो कप हमारे देश का एक बहुत ही प्रतिभाशाली पोलो टूर्नामेंट है, और सभी प्लेयर्स की कोशिश यही रहेगी कि आज राष्ट्रपति जी के सामने इस ट्रॉफी को जीता जाए। बॉडीगार्ड की टीम ने काफी जोश के साथ इस मैच में अपना जलवा दिखाया था, 3 गोल दाग दिए थे शुरू में, और उसके बाद लांसर्स टीम ने एक बड़ी अच्छी वापसी की, करारे जवाब दिए, और अब 5 गोल्स के साथ लीड में भी हैं। लेकिन पोलो के मैच में 3.5 मिनट का समय जो होता है वो बहुत लंबा समय होता है। 3-4 गोल तो अभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन कौन करेगा, कौन सी टीम जीत पाएगी वो गोल, ये देखना बाकी है। प्लेयर्स एक एक करके वापस आ रहे हैं मैदान पर, और 40 गज के स्पॉट से पेनल्टी दी गई है, ये पेनल्टी है बॉडीगार्ड टीम को। देखिए सिमरन शेरगिल बॉल को टी अप कर रहे हैं। Just before the half chukker break, there was a whistle from the umpire even before Simran Shergill put the ball through the posts, and that whistle was to indicate a foul. A penalty has been awarded to the Bodyguard team as the result of that foul, and this is an undefended goal mouth. Play called. Abhimanyu Pathak getting ready to strike the penalty.
30-yard penalty at an undefended goal mouth. Abby strikes. It's a straight hit. And the red flag goes up. The umpire says, yes, that's good. And that is goal number 5 for the Bodyguard team. सभी दर्शकों से अनुरोध है एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों टीम्स के लिए। 5 गोल ईच। स्कोर बोर्ड पर 3 मिनट का समय बाकी है प्रेसिडेंट पोलो कप में और देखना है विजय किसकी होगी आज। पूरा यकीन है कि सभी प्लेयर्स अपनी जान लगाने वाले हैं इस प्रतिभाशाली पोलो की प्रतियोगिता को जीतने के लिए। इस तरीके से अब नवीन सिंह के पास बॉल है। नवीन सिंह ने बॉल को आगे बढ़ाया। लांसर्स टीम के लिए आक्रमण कर रहे हैं नवीन सिंह ने। एक बार फिर वहां पे सिमरन शेरगिल उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन सिंह ने स्कोर कर दिया। यहां पे राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट के जितने भी सदस्य हमारे साथ खड़े हैं इनके चेहरों पे एक खास मुस्कान आई हुई है क्योंकि नवीन सिंह के पिताजी भी रेजिमेंट में सर्विस करते थे। नवीन सिंह इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द करंट नेशनल पोलो टीम। प्लेयर्स एक बार फिर सेंटर लाइन पर बॉल इन प्ले और ये बशीर अली ने बॉल को उठाने की कोशिश की। वहां पे बॉल ने ली डिफ्लेक्शन। सिमरन शेरगिल के पास बॉल है। सिमरन बॉल को धीमे धीमे आगे बढ़ा रहे हैं। वहां पे बशीर अली ने उनको हुक करने की कोशिश की। सिमरन ने लगाई एक टैप। सिद्धांत शर्मा तैयार है। लंबी लंबी शॉट होगी क्या? एक बार फिर लंबी शॉट के साथ उन्होंने दिशा को बदला। नवीन सिंह ने बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वहां पे कर्नल नवजीत संधू ने बैकहैंडर मारा। बॉल घोड़े के बीचों बीच रुक गई। नवीन सिंह ने बॉल को क्लियर करने की कोशिश करी। बशीर अली के पास बॉल है। बशीर अली ने बॉल को स्ट्राइक किया। सेंटर लाइन के साथों साथ सिद्धांत शर्मा रफ्तार बढ़ा रहे हैं और करारी शॉट के साथ बॉल को आगे बढ़ा दिया लेकिन बॉल बाईं तरफ वाइड चली गई है। वहां पे अभिमन्यु पाठक रक्षात्मक रूप से बॉल के आगे और बैकहैंडर के साथ दिशा बदलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बॉल वहीं पर जमीन पर पड़ी हुई है और बशीर अली एक बार फिर बॉल को पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। विसल बज गई। जैसा कि आपको बताया था जब 2 या 2 से ज्यादा पोलो प्लेयर बॉल की तरफ आते हैं अलग अलग दिशाओं से तो जरूरन एक फाउल करार होगा। देखिए एक बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर सड़क पे 2 या 2 से ज्यादा लोग गाड़ियों में एक दूसरे की तरफ आने लग गए अलग अलग दिशाओं में तो कुछ हादसा हो सकता है। इसी प्रकार से पोलो के मैदान पर भी अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग घोड़ों पर सवार एक दूसरे की तरफ आने लग गए तो एक हादसा होना मुमकिन है और इसी वजह से ऐसी सिचुएशन में फाउल दिया जाता है क्योंकि केवल एक प्लेयर का हक होता है राइट ऑफ वे टू फॉलो द लाइन ऑफ द बॉल। लेकिन अब केवल 1 मिनट का समय बाकी है इस मैच में तो पोलो के नियमों की जो जानकारी है वो हम आपको अगले मौके पर देंगे। मैदान के बीचों बीच से पेनल्टी लगाने वाले हैं सिमरन सिंह शेरगिल और टैप करने का निर्णय लेते हुए वहां 1 मिनट का समय बाकी है। बॉडीगार्ड की टीम अभी 1 गोल से पीछे है। सिमरन ने लंबी शॉट लगाई अभिमन्यु के सामने बॉल लेकिन बॉल पे इतनी रफ्तार है कि वो एक ही शॉट के साथ बैक लाइन की तरफ जाती हुई ऐसा लग रहा था कि बाहर जा चुकी है। बैकहैंडर जरूर लगाया वहां कर्नल नवनीत संधू ने लेकिन hit taken from the back line. That was Siddhant Sharma coming up with another booming shot. Simran Shergill getting ready and these two big hitters and the ball has been intercepted beautifully by Bashir Ali. Everything happening in the dying seconds of this game. और ये बशीर अली ने बॉल को चुरा लिया। देखिए किस जोश के साथ आक्रमण कर रहे हैं बशीर अली। वहां पे विसल बज चुकी है। बशीर अली खुशी से फूले नहीं समा पा रहे वहां पे। मेरे ख्याल विसल की आवाज उन तक नहीं पहुंची है लेकिन कोई बात नहीं। जोश के पूरे नंबर। एक बार जोरदार तालियां जरूर हो जाए जो दोस्तों। 29 सेकंड्स का गेम बाकी है। 29 सेकंड्स दिख रहा है आपको क्लॉक पे बाकी है और फाउल मूव करार दी गई।
पोलो में निराश होने का समय नहीं होता। बशीर अली एक सेकंड के लिए निराश हुए, लेकिन अब उनको रक्षात्मक रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा। वहां पे सिमरन शेरगिल के पास बॉल है। 28 सेकंड्स, कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं इस मैच में। सिमरन के पास बॉल है, नवीन सिंह उनके आगे हैं। नवीन ने लगाया बैकहैंडर और इसी के साथ एक बार फिर बहुत ही शानदार बैकहैंडर लगाया वहां कर्नल नवजीत संधू ने। देखिए डीनो ढनकर ने बॉल को, चलती हुई बॉल को करारा शॉट दिया और हुक किया वहां सिमरन शेरगिल ने। और क्या लंबी शॉट लगाई नवीन ने, वहां पे पूरी गेम ही पलट दी। और इसी के साथ मैच की फाइनल विसल भी बज चुकी है। दोस्तों प्लेयर्स एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लांसर्स टीम इस मैच की विजेता 6 goals to 5। So ladies and gentlemen, on that dramatic note, the President's Polo Cup comes to its concluding moment with the Lancers team winning this match 6 goals to 5, giving us a very exciting display of polo, very high quality polo played by all of these players. I'd like to request the winning team, the Lancers team, if you could please come by the grandstand for a victory lap, followed by the runners-up team. Ladies and gentlemen, may I request you for a round of applause for the winning team, the Lancers team, Master Dino Dhankar, Siddhant Sharma, Naveen Singh, Bashir Ali, and Dafadar Sukhjit Singh. Followed by the runners-up team, it's Simran Shergill, Abhimanyu Pathak, Colonel Navjeet Singh Sandhu, Shri Naveen Jindal, and Colonel Anup Tiwari. तो अब राष्ट्रपति अंगरक्षक परेड ग्राउंड में एक नई, एक विशेष और एक रोमांचक प्रक्रिया अब आपके सामने होने वाली है। जो लोग यहां पहले भी आए हैं, जिनकी किस्मत रही है, आप तो जानते ही हैं कि जब मैदान पे ट्रिक राइडिंग की टीम प्रवेश करती है तो क्या होता है, हमारे सबकी दिलों की धड़कन बढ़ जाती है ना दोस्तों। अब मैदान के बाईं तरफ कुछ हो रहा है, वहां हरकत सी हो रही है, कुछ महसूस हो रहा है हमें। ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द परेड ग्राउंड देयर इज समथिंग हैपनिंग देयर। वहां पर राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट के जांबाज सवार अपने अश्व योद्धाओं के साथ तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड मार्शल की एंट्री होगी। आज से 20 दिन पहले राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में जब सिल्वर ट्रम्पेट बैनर की भव्य सेरेमनी हुई थी, वहां पर आप सबने देखा था कि राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट ने एक ट्रिक राइडिंग का प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों वहां पर जो चुनौती है वो एक अलग प्रकार की होती है, क्योंकि वहां पर घोड़ों के पास रफ्तार पकड़ने के लिए कम जगह होती है, रुकने के लिए कम जगह होती है। लेकिन आज आपके सामने पीबीजी परेड ग्राउंड पर पूरी दूरी है। और देखिए एक्टिंग लांस दफेदार सुमित सिंह ने अपने झंडे के साथ संकेत दिया और आ गए बाईं तरफ से मैदान पर स्टैंडिंग सैल्यूट देते हुए नायब रसलदार सुंदर सिंह, दफेदार जितेंद्र, एक्टिंग लांस दफेदार सुखदीप सिंह, सवार हरदेव, सवार राज सिंह, सवार कृष्ण कुमार। राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय सेना का ध्वज और भारतीय अंगरक्षक रेजिमेंट का ध्वज आपके सामने से गैलप की चाल पर ले जाते हुए
एक एक करके आपके सामने अलग अलग नमूने पेश किए जाएंगे। दोस्तों, ये इतने खतरनाक प्रदर्शन है कि केवल भारतीय सेना के घुड़सवार और खासकर राष्ट्रपति अंगरक्षक के घुड़सवारी ऐसे प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, ये अब मैदान पे सबसे पहले उतर गए सवार विशाल सिंह। इनके घोड़े का नाम है हंटर और हाथ में है तलवार और चीर दिया इन्होंने ये फल और ये दूसरा भी काट दिया और पैक भी उठा लिया। देखिए कहां पे जाके रुका हंटर, मैदान के अंत में जाके। 150 गज की दूरी लगती है एक घोड़े को रुकने के लिए। अब आप सोचिए दोस्तों, आज से सैकड़ों साल पहले जब भारत के घुड़सवार कैवलरी हॉर्समैन, हमारे अश्व योद्धा जब दुश्मन पर संहार करते थे, अगर वो फलों को इस रूप से काटते हैं तो दुश्मन का क्या हाल होता होगा। और अब आपके सामने दफेदार जितेंद्र और उनकी घोड़ी तमन्ना हवा से बातें करते हुए आ रही है। देखिए, मटकी को फोड़ा पहली वाली और दूसरी की तरफ दूसरे को भी उड़ा दिया। ये थी दफेदार जितेंद्र और तमन्ना की जोड़ी। We will now have a demonstration of double crossing. So we have one pair of riders towards your right side, Sawar Rishal Singh, and acting Lance Avdar Sukhdeep Singh. We've got Sawar Krishan Kumar, Sawar Hardev Singh, getting ready from the extreme left side. We have a pair coming from the right and another pair coming from the left side. This is Sawar Rishal Singh and acting Lance Avdar Sukhdeep Singh, Sawar Krishan Kumar and Sawar Hardev Singh charging towards each other. यहाँ दिल की धड़कन तो रुक जाती है, हमारी सांस ही रुक जाती है, क्योंकि अगर कोई भी झिझक हो तो आप सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है जब घोड़े एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। और आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा, इन घोड़ों की रफ्तार तकरीबन 40 फीट प्रति सेकंड है। तो जो लोग मैथ्स के ज्ञानी हैं, आप लोग फॉर्मूला लगा लीजिए कितना मोमेंटम बनता होगा। 500 किलो का घोड़ा, 90 किलो का राइडर और 10-12 केजी का सामान भी लगा हुआ है और 40 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार। और अब आपके सामने प्रदर्शन किया जाएगा हैंकी पिकिंग का, जो ट्रिक राइडिंग टीम के सबसे वरिष्ठ राइडर हैं नायब रिसालदार सुंदर सिंह, और इनके घोड़े का नाम रॉकी। इनके पीछे आ रहे हैं सवार हरदेव सिंह और सुंदर सिंह मैदान के सामने। हरदेव ने उठाया दूसरा और सुंदर ने भी उठाया और अब तीसरे के लिए जा रहे हैं। That was a demonstration of hanky picking by Naib Risaldar Sundar Singh astride Rocky and Sawar Hardev Singh astride Virgo. We will now have a demonstration of team 10 pegging. 4 pegs have been placed in front of the Faryad Pavilion. 4 riders. Ready towards the extreme left side. Dafedar Jitendra astride Tamanna, acting Lance Dafedar Sukhdeep Singh, Sawar Krishan Singh and Sawar Rishal Singh. All charging towards the 4 pegs, coming across in a line abreast formation, getting ready, and they've got the ball. Your kind attention, please. May I request all players and match officials to please come quickly for the presentation.
Ladies and gentlemen, the players and officials are ready for the presentation. May I request you to please take your seats. देवी और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए. May I request the Honorable President of India to please join us for the presentation, ma'am, to give away the mementos and prizes. देवियों और सज्जनों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत से पहले सभी प्लेयर्स और राष्ट्रपति अंगरक्षक की ट्रिक राइडिंग टीम की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय राष्ट्रपति जी का. महोदया, आपकी आज्ञा और आशीर्वाद के साथ आज हमें अवसर प्राप्त हुआ कि आपके सामने अपने खेल का हमने प्रदर्शन किया. धन्यवाद. दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, दोनों टीम्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, मिलिट्री बैंड के लिए और राष्ट्रपति अंगरक्षक ट्रिक राइडिंग टीम के लिए. प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पोलो मैच की विनिंग टीम से. तो सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा आज के सबसे युवा खिलाड़ी का, डीनो ढनकर. लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर 17-year-old डीनो ढनकर, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12. He's already won a number of tournaments in the country. Mr. Naveen Singh played really hard for the Lancers team. Dafadar Sukhjeet Singh. Mr. Siddhant Sharma. And finally, Mr. Bashir Ali. And now players of the runners-up team for Bodyguard. We had Mr. Abhimanyu Pathak. Colonel Navjeet Singh Sandhu. Mr. Simran Singh Shergill. Mr. Naveen Jindal. Colonel Anup Tiwari, Commandant of the President's Bodyguard, also playing for his team. We now move on to the match officials. Mr. Uday Kalan, the match umpire.
Colonel Bhanu Pratap Singh. The match referee, Colonel H.S. Sodi, Vishis Seva Medal, former Commandant of the President's Bodyguard. And our veterinary officer, Colonel Neeraj Gupta. We now move on to members of the President's Bodyguard trick riding team. Naib Risaldar Sundar Singh. Dafedar Jitendra. Acting Lance Dafedar Sukhdeep Singh. Sawar Hardev Singh. Sawar Raj Singh. Sawar Krishan Kumar. Sawar Rishal Singh. Course Marshal, Acting Lance Dafedar Sumit Singh. And finally, आपके मैच कमेंटेटर शरद सक्सेना. देवियों और सज्जनों, अब वो समय आ गया है जो इस शानदार ट्रॉफी को जीता आज लांसर्स टीम ने. मैं निवेदन करूंगा सभी प्लेयर्स, लांसर्स टीम के सभी प्लेयर्स प्लीज आगे आइए. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for the winning team, the Lancers team, the winners of the President's Polo Cup 2022.
Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem.